सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। तो आज आम सेट 10 नहीं कि आसे इकोनॉमी उपरे जोटा कि हमर ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स ପାଇଁ बहुत एसेंशियल रहइबो। यदि आपण पूर्व 9टा सेट देखि नांती निश्चित रूप से देखंतु, प्लेलिस्ट मध्ये अछि, रिवाइज करंतु जहां भी क्वेश्चंस अछि जोटा कि आपण बहुत हेल्प करिवो एग्जाम रे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करिके स्टार्ट करिबा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो इंडिया जो हमर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अछि ता विषय किछटा स्टेटमेंट्स देछि। एठी कोन कहछि, a PMI above 50 indicates there's an economic expansion, and while below in 50 indicates there's a contraction. Correct. यदि 50 above अच्छी then economic expansion है, यदि below 50 अच्छी then contraction है। Okay. Second कौन कहे, the PMI measures only the manufacturing sector's performance. ना, not only manufacturing but also services sector. Okay. सर्विसेज सेक्टर सब जिन नोट करतु आम जहाँ जहाँ भी करेक्शन होउछि स्टेटमेंट से नोट करतु। तो स्टेटमेंटा भूल गला। थर्ड कौन कही, पीएमआई इज अ गवर्नमेंट पब्लिश्ड इंडेक्स। ना, पीएमआई गवर्नमेंट पब्लिक इंडेक्स नुहे, एटा होछि प्राइवेट एंटिटीज मेनली पब्लिश करंती, जेमति हमर रहला आईएचएस मार्केट। ओके, बट नॉट द गवर्नमेंट। कोटा ठीक है तो वन ओनली ठीक है। कौन पे न्यूज आसला ना, इंडिया जो पीएमआई रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गोटे 3 मंथ हाई हिट कला नवेम्बर 2024 रे, जोटा गोटे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखा मिल, जोटा कि इंडिकेट करथला गोटे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बुझियला। नेक्स्ट, नाउ विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम जहाँ कहूचे हमें ता विषय किछटा स्टेटमेंट्स। ओके देखिबा। The scheme aims to boost domestic manufacturing and reduce imports. Is it correct? Yes, it is. PLI कौन करछि, इंसेंटिवाइज करछि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तमे जति अधिक मैन्युफैक्चरिंग करियो सेति इंसेंटिव मिलिबो। तो सेटा करले कोन होछि, हमें इंपोर्ट्स ता कमी होछि, इंपोर्ट्स ता कमी होछि एडे। इंपोर्ट्स कमी होले कोन हमर प्राइसेस कमी जिवो। बुझले, इंपोर्ट जेतु होछि हेटा प्राइस रहिला बेलकु हमर कोन प्रोडक्ट्स गुडाकर प्राइस भी बढ़ुछि। तो जदि इंपोर्ट्स कमी जिवो प्राइस भी कमी जिवो। बुझियला। नेक्स्ट कौन कही, इट इज लिमिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स। ना, भूल। दिस स्कीम जोटा से कवर्स मल्टीपल सेक्टर्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑटोमोटिव, जमते हमर रहला फार्मास्यूटिकल रहला, एंड देन रहला टेक्सटाइल्स रहला, एंड रिन्यूएबल एनर्जी रहला, एंड बहुत गुडे सेक्टर्स, मल्टीपल सेक्टर्स, नॉट ओनली लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स किंबा ऑटोमोटिव सेक्टर्स। तो एटा भूल गला। थर्ड कौन कही, कंपनीज अवेलिंग बेनिफिट्स मस्ट अचीव इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन टारगेट्स। करेक्ट। कंपनीज जो मैंने जो प्रोडक्शन माइलस्टोन को अचीव करछंती दे आर क्वालिफाइड फॉर दिस इंसेंटिव्स। ओके, तो हमर 1 and 3 करेक्ट। कौन पे न्यूज रसला एबे जो कौन कला हइचे ना, गवर्नमेंट एक्सपैंड करछि पीएलआई स्कीम डिसेंबर 2024 रे। कौन करछि, इंक्लूड करछि इमर्जिंग सेक्टर्स, जेमति कि हमर सेमीकंडक्टर्स हला एंड हमर ईवी बैटरीज हला, एठी की एक्सपैंड करछि। ओके, बुझियला। नेक्स्ट देखिए, consider the following statements regarding the Reserve Bank of India digital rupee. Okay, RBI रो जो e-rupee आछि ता विषय रे ठीक देखिबा। से कहै, it is issued directly by RBI as a legal tender. Is it correct? Yes, it is correct. गोटे sovereign legal tender हिसाब रे आमे एटा देखि परछे। ओके, सेकंड को कहै, the digital rupee operates on a blockchain based decentralized system. ना, it is not decentralized, it is centralized and it is also managed by RBI. Okay, तो एटा भूल गला। थर्ड कौन कही, इट इज इंटेंडेड टू कंप्लीटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन द नियर फ्यूचर। ना, पूरा कंप्लीटली रिप्लेस करियार किछि भी नाही हमर फिजिकल करेंसी को, बट इट विल कंप्लीमेंट। ओके, कंप्लीमेंट करिवो हमर फिजिकल करेंसी को, सेटा भी चलथिबो एटा भी चलियो। तो हमर 1 ओनली करेक्ट। कौन पे न्यूज रे आसला, कारण आरबीआई जो एक्सपैंड करछि द रिटेल पायलट जोडा छोडे पायलट प्रोग्राम जोडा डिजिटल रुपी रो टू इंक्लूड मोर स्टेट्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। से पे न्यूज रे आसला। बुझियला। Next question. Consider the following statements regarding the Goods and Services Tax Council in India. So, GST Council is chaired by the Finance Minister. Correct? Finance Minister chair karandi. Second, decisions in the GST Council are made based on 2/3 majority of votes. Ita bhul. Amara 2/3 majority nuhe, but 3/4 majority. Okay? Center ra share roche amara 1/3 roche. ओके, सेंटर रे शेयर हम सब मन रखिया 1/3, 3/4 मेजोरिटी दरकार, बट सेंटर रे रोज हमर 1/3 वोट्स। ओके, जदी फेवर रे रहिला, इफ इट इज इन फेवर देन 1/3 रहिला, इफ नॉट इन फेवर देन 0 हो जिवो एटा। ओके,
एटी कौन कही 3/4 मेजोरिटी दरकार माने कौन 75% दरकार 75% टा जदि गोटे केस आसिला जदि सेंटर फेवर रे अछि देन 75% पहुंची जिवो जदि सेंटर फेवर रे नाही देन 75% पहुंची पारिबो नाही ओके the center is if the center is against the proposal then the weighted vote cannot reach 75% even if all the states agree to any proposal their total weight be only 66.7 okay the center जब approve करनी वे किसी भी डिसीजन टा नहीं हम थर्ड स्टेटमेंट कौन कही the states have equal voting power to union government in the council ठीक states तांकर जो अच्छी जो हमर कोथले 2/3 voting power टा अच्छी सेटा तांकर equal voting power टा रही union government से तो ठीक तो 1 and 3 करेक्ट तेटा कौन पे न्यूज आसला तो जीएसटी काउंसिल कौन करछि हमर टैक्स रेट फॉर सर्टेन आइटम्स कमई देछि ठीक अछि एंड इट आल्सो डिस्कस्ड मेजर्स फॉर टैक्स कंप्लायंस तो सिट पे न्यूज रे आछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फर्स्ट स्टेटमेंट कहछि द फंड्स रेज्ड फ्रॉम एसजीबीज आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स ठीक सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जोडा रहिला जेमति कि हमर रिन्यूएबल एनर्जी and pollution control ए जिनस पई दिया होछ तो एटा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स ठीक अछि सेकंड कोन कहै छी these bonds offer tax incentives for investors एटा भूल किछि टैक्स incentives दिया हो नहीं तो एटा भूल थर्ड कोन कहै छी SGBs are issued in both domestic and foreign currencies ना खाली डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी रे दिया हो नहीं खाली डोमेस्टिक रे दिया होछ तो एटा भूल हेगला तो आंसर कोन वन ओनली कोन बाय न्यूज रे असला इंडिया रो एटा होछ सेकंड ट्रांच रहिला एसजीबीज रो एंड इट वाज सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब्ड ओके सेटा आनिथिला सेकंड टाइम पे एसजीबी आनिथिला जोटा सेटा सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब्ड हे एच सिटमेटा न्यूज को आसला नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to India's economic policy consider the following statements about the national monetization pipeline okay तो national monetization pipeline विषय देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कीजिए NMP involves the sale of government assets to private entities is it correct ना सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स नुहे इटा कौन कहे कौन करे ना लीज करे लीजिंग करे एंड किंबा और ट्रांसफर करे राइट्स टू ऑपरेट ओके ये जो एसेट्स को बट ओनरशिप ट्रांसफर हब नहीं ओनरशिप ट्रांसफर हब नहीं ओके एटा भूल गया सेकंड को द पाइपलाइन कवर्स एसेट्स इन सेक्टर्स सच एज रेलवेज पावर एंड हाईवेज ठीक sectors include railways powers roads airports everything okay that ठीक third को कहै छी NMP aims to generate upfront cash flows for governmental investments ठीक एटा कोन करछि हमर जो रिसोर्सेज जति रहि तक मोबिलाइज कर दोछि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे की ओके that ठीक 2 and 3 करेक्ट कोन बाय न्यूज रेसला NMP एना कोन करछि ता फ्रेमवर्क को अपडेट करछि एंड सेतरे इंक्लूड करछि कोन हम मन रखिया वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड करछि and urban development projects ए दीटा जिनस इनक्लूड करछि तार फ्रेमवर्क ओके ए जो हम देखतले रेलवेज पावर हाईवेज रोड्स देखतले सेथरे ना वाटर रिसोर्सेज भी आछि एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आछि बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs ओके तो सर फर्स्ट कहछि इंडिया साइंड एन FTA विद द यूरोपियन यूनियन इन 2024 ना इंडिया किछि भी साइन करी नाही EU सहित negotiations चली but no FTA has been signed yet तो एटा भूल सेकंड को कहि FTAs focus on reducing tariffs and improving market access correct reduce करियो trade barriers को reduce करछि and it will enhance the bilateral trade opportunities तो एटा ठीक थर्ड को कहि the regional comprehensive economic partnership includes India as a member ना इंडिया 2019 रे ऑप्ट आउट कर देला ए थ्रू बाहरी गला कहीं चाइना बैक्ड रोचे बोली तो से से ऑप्ट आउट करियला तो एबे से तार मेंबर नाही भूल तो हमर आंसर कोन ओनली 2 करेक्ट कोन पे न्यूज रे असला इंडिया तार जो FTA टा एक्सपैंड करछि आसियान नेशन सहित यांक सहित से एक्सपैंड करछि कोन करिया को ना टू कवर मोर गुड्स सर्विसेज ठीक है एक्सटेंड कराइछ माने एक्सपैंड कराइछ बुझियला नेक्स्ट with reference to Atmanirbhar Bharat rozgar yojana consider the following statements okay idhar kachi the scheme aims to boost employment generation in the formal sectors is it correct yes ABRY
इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट ओके जो हमरो इनिशिएटिव टा कोन पे एटा हिचे एटा ना टू प्रमोट फार्मर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ओके तो एटा ठीक है सेकंड कोन हिचे इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स फॉर हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज ठीक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया होची इन द फॉर्म ऑफ कोन ना ईपीएफ कोन ना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सही हिसाब रे एटा कंट्रीब्यूशंस दिया होची ईपीएफ कंट्रीब्यूशंस दिया होची जेमते कि न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज पई ओके थर्ड कोन हिचे द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड organization EPFO implements the scheme correct EPFO एटा को implement कराउछि and it also aims to provide social security benefits कहा को ना employees मानको तम all three correct एटा न्यूज रे कोन आसला ना the government extended ABRY till March 2024 कोन पे to support formal employment जो economic recovery चलছে সেই ভিতর পাই কি next consider the following statements about the international monetary fund से कहछि the IMF provides financial assistance to countries facing balance of payment crisis is it correct yes IMF कोन करे असिस्ट करे जो मन तार मेंबर अछि मेंबर कंट्रीज मानकू तांकर BOP इश्यूज जुडा को टैकल करियो केमिति ना जेमते फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ठीक है पैसा पत्र दे की असिस्टेंस दे की सेटा को ठीक है हेल्प करंती तेटा ठीक हैला सेकंड कोन अछि इट इश्यूज स्पेशल ड्राइंग राइट्स एज अ ग्लोबल रिजर्व एसेट ठीक SDR जोडा करूछि हमर इंटरनेशनल रिजर्व्स ओके SDR जोडा रहउछि इंटरनेशनल रिजर्व एसेट it is allocated only to the member countries that ठीक third कोइछि India is the second largest shareholder in the IMF after United States ना United States परे आहुरी बहुत कंट्रीज हैं जेमते चाइना हला जापान हला इंडिया बहुत तळे आछी तार शेयर होल्डिंग रोज 2.75% एंड इंडिया ही जोछि हमर 8th लार्जेस्ट ओके जदि यूएसए को देखिबा तार ही जोछि अराउंड 17.45% और चाइना रो रोछि 6.41% एति हमहु जानियार अछि कि एक नंबर रे अछि इंडिया रो रैंक केते इंडिया रो शेयर होल्डिंग केते बुझियला एटा भूले तो 1 and 2 करेक्ट कोन बाय न्यूज रे असला ना इंडिया कोन करछि हमरो से कथा पकेछि कि रीअलोकेशन ऑफ एसडीआरस जेंति कि इमर्जिंग इकोनॉमीज पाई कि ओके इमर्जिंग इकोनॉमीज पाई एटा कोन खाली मेंबर कंट्रीज पाई थिला तो एबे कोन करछि ना रीअलोकेट कराबो एसडीआरस को जो माने इमर्जिंग इकोनॉमीज अछंती बेसिकली सही भितरे जो माने अछंती Next, consider the following statements regarding India's carbon trading mechanism. The national carbon market aims to reduce greenhouse gas emissions by incentivizing cleaner technologies. ठीक, market incentivize करूची companies को to adopt a technology that would reduce the emissions. है ठीक. Second question, the scheme is mandatory for all industrial sectors in India. Nah, not mandatory for all. Okay. इटा initially target करूची जो माने high emissions अछंती. High emission industries okay not all so eta bhule gala and it is also not mandatory for all sectors and third koichi it aligns with India's commitment under the Paris agreement ठीक India रो जो अछि nationally determined contributions जोटा कि हमें कहूछु NDC एटा आसी जो हमर Paris agreement रे तो एटा ठीक हला तो 1 and 3 correct कॉम्बाइन यूजर असला इंडिया जो कार्बन मार्केट पायलट इट वाज लॉन्च्ड इन 2024 कोन पे टू प्रमोट लो कार्बन इकोनॉमिक ग्रोथ हो बट इट शुड बी लो कार्बन बुझियला नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट द रिपोर्ट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स सच एज स्टार्टिंग अ बिजनेस पेइंग टैक्सेस एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसीज हमर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थिला एडा रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स उडा को मेजर करछि जेमति कि हम स्टार्टिंग बिजनेस कथा कहला कॉन्ट्रैक्ट्स केमति एनफोर्स करा होछि केमति कंस्ट्रक्शन परमिट्स आना होछि एंड इंडिया मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बिटवीन 2014 to 2020 especially in areas like insolvency resolutions and ease of cross border trade एई दुटा भितर टिके भलो इंप्रूवमेंट देखैछि ओके जेमति कि हमर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आसिला ठीक है सेटा इंडिया रैंकिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कला ओके सेकंड कोन कहिछि तो एटा ठीक है सेकंड कोन कहिछि इंडिया वाज अमंग द टॉप 50 नेशंस इन द लेटेस्ट रिपोर्ट ना इंडिया हैज नेवर रीच्ड द टॉप 50 इट्स बेस्ट रैंकिंग वाज 63 केबे ना 2020 रे एटा भूले थर्ड होछि द रिपोर्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय द वर्ल्ड बैंक ड्यू टू एथिकल कंसर्न्स रिपोर्ट हमर 2021 रे डिसकंटिन्यू हो जेतला आफ्टर एन इंटरनल ऑडिट जोटा कि रिवील कला कि से डाटा उडा को मैनिपुलेशंस होच फॉर सर्टेन कंट्रीज जेमति तक रैंकिंग्स उडा इंप्रूव हे परियो तो एटा ठीक तो 1 and 3 करेक्ट
कौन न्यूज आसला एना डिस्कशन चलती कि आमर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है एटा रिप्लेसमेंट हम या रिप्लेस करा विथ अ मोर रोबस्ट सिस्टम जोटा कि आमर G20 मीटिंग्स रे डिस्कशन होता। ओके नेक्स्ट with reference to India's unemployment rate as per the periodic labor force survey, consider the following statement. The PLFS विषय पचाच। The PLFS provides quarterly data for urban areas and annual data for rural and urban areas combined. Is it correct? Yes. ଆମର PLFS टा किए कंडक्ट करछि मते कमेंट रे कहबो PLFS टा किए कंडक्ट करछि ठीक अछि त कमेंट रे कहबो। And it also provides जो जेमति कहै quarterly unemployment data provide करछि specifically for urban areas and annual data रे जोडा रहउछि सेटा both urban and rural regions रहउछि। यार सिग्निफिकेंस कोन ए जो बाइफर्केशन अप्रोच टा बाइफर्केटेड अप्रोच टा रहला इट एड्रेसेस द डिस्टिंक्ट नेचर जोटा कि अर्बन और रूरल लेबर मार्केट रो जो डिस्टिंक्ट नेचर टा अछि सेटा को से एड्रेस करूछि। ओके सेकंड स्टेटमेंट कोन कहै छै त एटा करेक्ट हिला। सेकंड स्टेटमेंट कोन कहै छै अनएम्प्लॉयमेंट रेट measures the percentage of people who are not working and not seeking work. भूल unemployment rate टा measure करछि जोड़ा percentage of people actively seeking for jobs but unable to find them। ठीक अछि मु जदी ना unemployed अछि and मु एबे जॉब भी खोजु नाही then मु सेटा unemployed हिसाब रे मु जिबि नाही। जदी मु माने if I am not working unemployed को हाबनी if I am not working जदी in the second case if I am not working but I am actively searching for a job then सेटा मु कहि परबी unemployment। ओके तो एटा भूले गला। थर्ड कोन the survey includes parameters such as workers participation and income levels। ठीक मुझे PLFS टा थिला जेमे इंफॉर्मेशन रखु छै लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स जोटा कि हमें LFPRB कहू छै लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियोज WPR एंड इनकम लेवल्स रहला जेमति गोटे डिटेल्ड व्यू मिल पेरो लेबर मार्केट रो ट्रेंड ऊपर। यार सिग्निफिकेंस टा कोन रहउछि ना इट वुड प्रोवाइड मोर इनसाइट्स कि जस्ट नॉट ओनली जस्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट बट आल्सो द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग कोन कोन अवेलेबल अछि हम कंट्री रे क्वालिटी एंड टाइप ऑफ वर्क बुझिला। तो यार आंसर कोन हला 1 and 3। नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोटा कि हमारा मनरेगा से कहै छै मनरेगा guarantees 100 days of wage employment in a financial year to every rural household। Is it correct? Yes. The 100 days of wage employment मिलछि rural household को particularly कहा को एम कराउछि ना aimed at to improving livelihoods during lean agricultural periods। तो हम रूरल के टारगेट कराइ छी हमर जेतले एग्रीकल्चर सीजन्स ता रहुनी सेतले सेमानकर इनकम कोन रोज किछि रहउनी तो हेत पई कि गवर्नमेंट कोन करछि ए जो एक्ट द्वारा 100 days of wage employment मिलुछि तांको सेटा को कोन करिया कंपेंसेट करिया से टाइम रे जति एग्रीकल्चर हेई परनी तांकर बुझिला तो एटा ठीक। नेक्स्ट कोन कहै छै द स्कीम इज डिमांड ड्रिवन मीनिंग वेजेस आर रिलीज्ड ओनली व्हेन वर्क इज रिक्वेस्टेड। ठीक एटा होचे डिमांड ड्रिवन वर्क जेतले प्रोवाइड करा होचे देन ओनली गोटे हाउसहोल्ड फॉर्मली माने गोटे एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट करि परियो। ओके एंड इट एंश्योर्स फंड्स एलोकेटेड बेस्ड ऑन रियल नीड्स। आ ए जो अप्रोच टा प्रिवेंट करछि कोन ना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू आल्सो इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी। ओके तो एटा ठीक अछि। थर्ड कोन कहै छै द कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल ऑडिट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। ठीक सीएजी हमर रेगुलर ऑडिट करछि मनरेगा को जेमति हमर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हे परयो जहां भी फंड्स आछी एंड जहां भी इनएफिशिएंसीज हला इन इंप्लीमेंटेशन रे सेटा को आइडेंटिफाई करियर अछि। तो एटा ठीक तो ऑल थ्री करेक्ट। कोन पे न्यूज रे असला ना मनरेगा एबे फेस करथला जो फंडिंग शॉर्टेजेस हला जोड़े कि हमर रूरल वर्कर्स प्रोटेस्ट कले जेमति कि टाइमली वेज पेमेंट्स मिलु नथला से प्रोटेस्ट होतला से पे मनरेगा न्यूज रे आस्थला। नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट। से कहै FRBM एक्ट मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द GDP। ठीक हमर जो FRBM एक्ट आसिला जोटा कि 2003 रे सेटा कोन कला ना फिस्कल कंसोलिडेशन टारगेट उड रखला कि फिस्कल डेफिसिट जो सीलिंग अछि सेटा 3% ऑफ GDP रे रहइबो सेंट्रल गवर्नमेंट रो। ओके एंड ए जो टारगेट टा एम करछि कोन टू मेंटेन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आउ अनसस्टेनेबल पब्लिक जो डेट रही छै सेटा को प्रिवेंट करिया एटा ठीक। सेकंड कोन कहै छै द एक्ट अलाउज डिविएशन फ्रॉम फिस्कल टारगेट्स ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक नेचुरल कैलामिटीज। ठीक ए एक्ट गोटे अछि एस्केप क्लॉज मन रखिया हमें एस्केप क्लॉज इधर कोन कहै छै
एटा परमिट करछि जो डेविएट करि हबो टारगेट्स रो जति स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस अंडर रे जेमति कि वार हला नेचुरल कैलामिटीज हला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हला सेत पे तो आमे एटा जो कोविड-19 पैंडेमिक आसला ना सेतले फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स रिलैक्स कराई जेतला ठीक अछि देखिया थर्ड स्टेटमेंट कोन कहै छै एटा त ठीक हे गेला से कहै छै फिस्कल काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर FRBM एक्ट टू एंश्योर कंप्लायंस विथ फिस्कल टारगेट्स भूल FRBM एक्ट रेकमेंड करछि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिस्कल काउंसिल ठीक अछि टू ओवरसी द कंप्लायंस बट सच अ बॉडी हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया प्रपोजल्स अछि फॉर्मेशन पई कि बट सेमति किछि हेइनी फिस्कल काउंसिल हमर तयारी हेइनी कोन पई एटा मैटर करछि ना फिस्कल काउंसिल जो जदी तयारी हला सेटा गोटे प्रोवाइड करो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट प्रोवाइड करो जेमति कि हमर जो फिस्कल स्लिपेजेस को रिड्यूस करि हबो ठीक अछि तो एटा होछि हमर इनकरेक्ट तो 1 and 2 होछि करेक्ट कोन पई न्यूज रेसला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करछि अमेंडमेंट्स किछटा FRBM एक्ट पई कि जोटा कि रीडिफाइन करियो फिस्कल कंसोलिडेशन टाइमलाइंस को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to India's export promotion capital goods EPCG scheme consider the following statements EPCG allows duty free import of capital goods for manufacturing exports correct the EPCG scheme जो आसिला एटा एक्सपोर्टर्स को मन कोन एनेबल करछि टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स जेमति कहला मशीनरी विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज तो कस्टम ड्यूटीज एटू हटिएच प्रोवाइडेड they use them to produce export goods जदी से मशीनरी रो एक्सपोर्ट गुड्स किस्टा बाहर छै देन तम कस्टम ड्यूटीज माफ हे जाउछ बुझला अब एटा जो रिड्यूस कर दो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दबो एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाई दबो बुझला तो एटा ठीक है गला सेकंड कोन कहै छी द स्कीम रिक्वायर्स एक्सपोर्टर्स टू मीट अ मिनिमम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ठीक बेनिफिशियर्स जो मन रहले दे मस्ट फुलफिल एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जेमति कि 6 to 8 times the duty saved within a specific time frame typically 6 years and this will ensure that the scheme contributes to export growth and also it does not result in misuse बुझियला तो एटा ठीक थर्ड कोन कहै only micro and small enterprises जोटा कि MSE कहउचो are eligible to avail benefits under this scheme भूल scheme is open to all export oriented businesses not just MSEs ठीक है लार्ज एक्सपोर्टर्स होंतु कॉर्पोरेट्स होंतु से माने भी यूटिलाइज कर परियो एंड कंपनी मैटर करछि ना हमर जदी लार्जर एंटिटीज को एक्सक्लूड करा होछि इट वुड सिग्निफिकेंटली लिमिट द स्कीम्स इफेक्टिवनेस बूस्ट आही परिबनी एक्सपोर्ट्स उडा से पई कि समस्त को एटा जति कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस अछंदी तांका पई एटा आस जाउछि बुझियला तो एटा भूल यार तो हमर 1 and 2 करेक्ट कोन पई अगेन एटा न्यूज रसला ना द गवर्नमेंट कोन करथिला ना इट रिवाइज द EPCG गाइडलाइंस 2024 से कोन कहले ना हम एप्लिकेशन प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करिया एंड आल्सो पार्टिसिपेशन को एनहांस करिया जो माने स्मॉलर एक्सपोर्टर्स अछंती ताकर पार्टिसिपेशन केंदे बढ़े हबो सेट में एटा न्यूज रे आस्तला बुझिला तो आज रे वीडियो में एतेटा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करले आशा करछि आपन को क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भल लागुछि हमर वीकली करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स सब अच्छे हम वेबसाइट रे निश्चित रूप से जाई कि देखि परिबे सेतर बहुत क्वेश्चंस आछी एग्जाम रे तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अच्छी जेंते कि टेलीग्राम चैनल हो निश्चित रूप से जॉइन करे सेठी हमको सब पीडीएफ मिल जिवो इंस्टाग्राम भी अच्छे सेठी हमको फॉलो भी करिवे व्हाट्सएप रे जदी किछि आपन क्वेरीज अछि व्हाट्सएप रे भी हमको कांटेक्ट करि परिबे देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।